जय श्री माताजी। ऑनलाइन उपस्थित सभी भाई बहनों का आज शाम के ध्यान सत्र में प्रतिष्ठान पुणे से हार्दिक स्वागत है। We welcome all brothers and sisters in today's evening collective meditation from Pratishthan Pune. दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर हम श्री माता जी को नमन करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। We bow down to Shri Mataji and will take collective bandhan. दोनों हाथ गोदी पे, चित्त पूर्णतः सहस्त्रार पर एकाग्र करेंगे और श्री माता जी से हम ध्यान में बैठने के लिए अनुमति मांगते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आज शाम के इस ध्यान में हमें बैठने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। Shri Mataji, please grant us your divine permission to sit in collective evening meditation. 3 महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे।
संतुलन करने हेतु अपना दायां हाथ पृथ्वी माता पे रखेंगे और बायां हाथ गोद पे रखेंगे। We'll keep our left hand on lap, right hand on Mother Earth. परम पूज्य श्री माताजी, कृपा कर सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी शुद्ध करके शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माताजी, प्लीज cleanse our ईड़ा नाड़ी and bless us with the power of pure desire. We'll keep our full attention on ईड़ा नाड़ी। हम कुछ क्षण अपना पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पे रखते हैं। धीरे से हम अपना दायां हाथ गोदी पे रखते हैं और बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे। We'll keep our right hand on lap and left hand towards the sky. परम पूज्य श्री माताजी, कृपा कर सामूहिकता की पिंगला नाड़ी शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। हम अपना पूरा चित्त पिंगला नाड़ी पे रखेंगे। श्री माताजी, please cleanse our Pingala Nadi and bless us with the power of pure action. We'll keep our full attention on Pingala Nadi. धीरे से हम अपना बायां हाथ गोदी पे रखेंगे। We'll keep our left hand on the lap. हम अपना पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे रखेंगे। We'll keep our full attention on सुषुम्ना नाड़ी। श्री माताजी, कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध करके हमारे अंदर संतुलन प्रदान कीजिए।
श्री माताजी कृपा करके हमारा ये सूक्ष्म शरीर शुद्ध तथा चैतन्यमय बना दीजिए। हम अपना पूरा चित्त मध्य मूलाधार चक्र पे एकाग्र करेंगे। We'll keep our full attention on center मूलाधार चक्र। श्री माताजी कृपा कर हमारे अंदर श्री गणेश जी की अबोधिता, पवित्रता, मांगल्य, इन सभी गुणों से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री माताजी, प्लीज ब्लेस अस द एंटायर कलेक्टिविटी with the power of Shri Ganesha. धीरे से हम अपना चित्त मूलाधार चक्र से नाभि चक्र पे लेके आएंगे। We'll keep our attention on center नाभि। परम पूज्य श्री माताजी कृपा कर सामूहिकता का नाभि चक्र पूर्ण जागृत करके श्री लक्ष्मी नारायण की सभी गुणों से हमें आशीर्वादित कीजिए। धीरे से हम अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माताजी कृपा कर हमारे अंदर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती के सभी गुण जागृत करके हमें आशीर्वादित कीजिए। धीरे से हम अपना चित्त भवसागर पे लेके आएंगे। हम अपने चित्त से भवसागर को बंधन देंगे। We'll keep our full attention on void. धीरे से हम अपना चित्त सेंटर अनाहत चक्र पे लेके आएंगे। We'll keep our full attention on center heart chakra. We'll keep our
राइट हैंड ऑन सेंटर हार्ट चक्र। हम अपना दाया हाथ मध्य हृदय पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्भयता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर जो भी षड्रिपु है उनका नाश करके हमारा हृदय पूर्णतः प्रेम करुणा से भर दीजिए। श्री माता जी, प्लीज डिस्ट्रॉय all 6 enemies within the entire collectivity. And let our heart will be full of joy and love. धीरे से हम अपना राइट हैंड लेफ्ट हृदय पे रखेंगे। We'll keep our right hand on left heart. हम अपना पूरा चित्त लेफ्ट हार्ट एंड सहस्त्रार पर एकाग्र करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मैं पूर्णतः निर्दोष हूँ। इधर हम आत्मा परमात्मा का मंत्र लेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। हम अपना दाया हाथ गोदी पे रखेंगे। विल कीप आवर राइट हैंड ऑन द लैप। अपना पूरा चित्त सहस्त्रार पर एकाग्र करेंगे। विल कीप आवर फुल अटेंशन ऑन सहस्त्रारा। परम पूजनीय श्री माता जी, आज के इस ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज ब्लेस अस with thoughtless state of awareness. Please establish my self-realization.
इसी ध्यान की अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। आज की अमृतवाणी है श्री महाशिवरात्रि पूजा 17 मार्च 2002 पुणे। In this state of meditation, we will listen Shri Mataji's Amrutvani. Today's Amrutvani is Mahashivaratri Puja 17 March 2002 Pune. Jai Shri Mataji. People will say stupid, the way he goes on, the way he works it. But I don't think so. That's not at all the description. The description of a man who is a bhakta of Shiva, has no interest in money, is very generous. Anything you ask from that, he'll give. Mahavira was like that. Mahavira had gone for his meditation in his own garden. And Vishnu, as Shri Krishna, came and told him that, see, I have no clothes. You have got this cloth, why don't you give me half of it? He said, all right, you can have. You can have the whole. Because he said, this my house is here, I'll just wear my clothes. What he did was not to show that nudity is a very great thing. But if you see the Jains, what they do, they make big, big statues of Mahavira, showing him completely nude. I mean, this is the perversion of human mind. Why he did it, we should know. He was so detached, so detached. So he gave away the clothes, what is the harm? It was not to show off or anything, but the generosity, people don't understand. And the Jainis are the least generous. So, the quality of all these great incarnations also not understood. Because a kind of an illusion is there. For example, Shiva is always with very few clothes. Very few. And what does he eat? No one knows. What is his desires and what does he want? No one knows. A person with great knowledge of music will sing before him, is all right. Or even any madcap comes and sings, he's all right. For him it doesn't matter. He's not meticulous about how the music is and what the notes are, whether it is all right or not. No. He is beyond all these things. He is beyond all these formalities that we have about everything. He is beyond. He is spirituality itself. He is beyond all these things. Whether you are a musician or you are an artist, whatever it is you are, he'll enjoy. He's the enjoyer. And he'll enjoy. Whatever is simple, whatever is given with the heart, he'll enjoy. Whatever is expressed with the heart, he'll enjoy. He is not a conditioned person, that it should be modern,
he should be such and such. He's not conditioned. He doesn't think that way. Like human beings will sit down and make a meticulous everything. Does it fit into it or not? Even for art, even for anything that is created out of somebody's heart, they'll try to discourage that person. I've seen people, they have such conditioning. And one thing about Shiva, he has no conditioning of it. Nothing. That's why they call him a mast mola. He is not at all conditioned. If you have any conditioning in your mind, then you are not Shiva Bhakta. It's all right. You should dress up well, you should do this. But you should not have conditioning that if you don't do that, then you are being out of caste, out of fashion, out of this. It is very difficult for people not to accept. All kinds of fashions are coming nowadays, all kinds. I tell them, what is this? This is the fashion. Is it some god behind this fashion? Or is there some deity who is telling you these fashions? Today it comes, tomorrow it will disappear. So what I am saying, that if you have to worship Shiva, you should decondition yourself. You are living in the world of Sahasrara. Now somebody is not properly dressed, finished. Somebody is over popularly dressed, finished. The human beings have a capacity to criticize everyone. And to criticize everyone is nothing fundamental. Because if you do it on vibrations, one can understand. But not on vibrations. Just because this is not the fashion, that is not the fashion. What is the passion of Shiva? Tell me. Has he any fashions? Anything you give him, he is happy. Whatever you give him, he eats that. He is full of such appreciation because he is personified as joy. He is peace and he is joy. If you are worshippers of Shiva, then you should not have any conditioning of any kind. I mean, normally I also wear simple sarees, very simple. And it happens that people think I am a very poor woman. I am poor. Because I don't care for money. I don't bother. So, we should know that Shiva is the poorest man, purest God. He doesn't wear any alankaras, he doesn't wear anything, just he lives with his own body. Because he is nothing but embodiment of enjoyment. Nothing but complete form of enjoyment and joy. So another quality of Shiv Bhakta should be joy. You should be joyous about everything. Whatever you see, whatever type of person you see. So the only way you can do is give up human quality of criticism. To criticize others. Like if the English go into the Indian house, say we don't like it. That's what? What you don't like? We didn't like the carpet. I don't like it itself is against you. Shakti. Then if supposing an American goes to an English home, he'll say, I don't like it. It's very common. All the people say, I don't like it. I didn't like that. Who are you to say I don't like it or I like it? People don't realize that by saying all these things, you are showing
that knows you principally. I can understand somebody who cannot walk or ride. For such a person is allowed to use some sticks or something, allowed. But if he says, I don't like that person because he doesn't use the stick, shows that he's such an egoistical fellow. Himself is using the stick and he wants to create what votes or what in a democratic country that people should walk with the sticks in their hands. It is very difficult. In the West it is very common, you see, to have this kind of a hat, to have this kind of a dress, to wear this kind of a chirut, or all kinds of things have a condition. Nowadays the hairstyle has become very funny with women because they don't put oil in their hair. They will not have any grease in their head. If somebody is going to meet them, they'll wash their hair. I don't think it looks very nice. Of course, I don't say that you need not have so much of oil on your face and ears. But what is so important in life is also, this is another thing, that we are very self-centered. We want to impress people. If I wear a dress or anything, it should impress. I mean, even if it impresses what? If a snake comes along, he'll bite you, whatever dress you might be wearing, whatever country you might be from. All this kind of identification doesn't behove a Shiv Bhakta. A Shiv Bhakta has to be just absolutely lost in the raptures of joy. Very particular about hairdress, very particular about dresses. I don't know what they are particular about. With all that, what do they gain? Nothing. Do they become popular? And this kind of popularity, which is so skin deep, what's the use? Must have respect of your being as not only human beings, but as Sahajayogis. We are Sahajayogis. We are Shiva's Bhakt. We don't care. We are not bothered. Whatever it is, Shiva is there within us, and we shine with that power within us that is of Kundalini. You may be very well dressed, you may be anything. Your vibrations are bad. What's the use? If you cannot judge people by their vibrations, by nonsensical things like their dress and moustaches, is it of any value? In Sahaja, your value system has to be Sahaja. I've seen many people, I don't like their house, I didn't like this. I don't like, if the sentence is nishiddha, is to be given up by Sahajas. If you don't like anything, you are not a Sahaja. Of course, I mean, if there's somebody who is anti-Sahaj and all that, but still by saying, I don't like, what are you going to gain? The waste of energy. Because of this, in Sahajayoga I have seen people have created problems for me. So many problems. Only because they are so much self-oriented.
this man is bad, that woman is bad, this, that. Sometimes I'm surprised because when those people come to me, I'm amazed that they are very nice people. But people are very self-centered also. Like I've seen people who are not bothered to come to meetings, to pujas, because they have got work. Altogether there are 11 pujas. But they don't come. Because they are very busy. At least to one puja you should come. But those who are Shiv Bhaktas only enjoy nothing but pujas. Nothing else. Their whole being is absolutely vibrated with Shiv Puja. To them, that's the most important thing to do. Also, there are people in Sahajayoga who are trying to make money out of Sahajayoga. Very wrong, very wrong, very wrong. Sahajayoga is to give you punyas, to give you blessings. And if that is not in your mind, better give up Sahajayoga. You can join some business of something, of malpractices. Very easy, very easy. Till you end up in the jail, you are there. But to enjoy your spiritual powers, you must learn certain things. And one of them is decondition yourself. I don't like it, or I like it. This sentence must go away from your tongue. Likes and dislikes are only for people who have limited vision. You should learn to appreciate. Your power of appreciation will show how spiritually you are endowed. And your power of observation will show what do you observe. For example, some people will come and tell me, I didn't like that lady, she was wearing a funny sari. What is this? I didn't like her because she had put her hand on her head. So what? Because you make your own images of people. And you want everybody to be like that, otherwise you don't like it. Whether you like it or don't like it, nobody is going to change. Why waste your energy? Sometimes there are musicians who are not so good. I remember once I went home and I asked my father, how does this musician sing? He says he's very courageous, very courageous. I said, why? What happened? Well, he sings without bothering about people. And he goes out of tune, sometimes he goes out of tala, doesn't matter. But he sings. He's very courageous, himmat wala. So that's how we used to appreciate and sing. When this fellow started singing, I saw he was like that. But my father was saying, wow, what doing? And encouraging him. See, I've seen in my father these divine qualities. How he used to tolerate, how he used to, not tolerance also, just appreciation of any kind of thing he used to appreciate. That's what, if the Sahajogis have that condition of appreciation, they'll enjoy everything. Because you kill your enjoyment, do you know that? You are all variety of people here, all variety of dresses, of variety families, and so many of countries you are here
To me, you are nothing but Sahajogis, my children, that's all. Now, I don't go on judging you on your dress or on what your hairstyle is. No. All modern things are extremely conditioning. And they condition you so much that you get irresponsible. As Sahajogis, you get irresponsible. Your first and foremost responsibility is Sahaja, because you should know what a work it is. So such a great work to transform the whole world, that's my vision. At this old age also I think the same way. Now if that is my vision, what should be your attitude? That we should go all out to spread Sahaja. That's the main thing. I call you for these pujas just to renovate, I should say, or to give you more of energy and all that. But if you are just taking it as a great blessings and sitting at home, it's of no use. You must spread Sahaja. I was surprised that they said in Lucknow there are only 200 Sahajogis. How can that? First time I went to Lucknow, there were at least 3,000 Sahajogis. And we had not fixed any hall or anything. And can you imagine, suddenly I find so many. How is it there can be 200 Sahajogis? Either you are telling lies or you are good enough for nothing. So the responsibility of all the Sahajogis, first and foremost, is to spread Sahaja. How many people have you given realization? Where have you talked about Sahaja? I have seen even in the plane if you are traveling, anyone who is there will tell me, my guru is this, such a great guru, this, that. Openly, shamelessly about horrible gurus. And while you people are very shy to talk about Sahaja, never publicly, unless and until you have a program and public program and all that. You have no time also for Sahaja. Very busy people. So, if you have to follow Shiva and his blessings all the time, his protection to you, then you have to be Sahajogis of very high quality. It shows when you go all out to spread Sahaja. That is the thing missing. I am very happy that in Australia, Sahajayoga has spread so much. I don't know what has happened. In a far-fetched place like Australia. In the beginning I had some setbacks, but now it has spread. Also in Austria it has spread, and also in Italy. But otherwise, just doesn't spread. What's the matter? The matter is the leaders are not going all out. Say for in England I travel from north to south, east to west in all the directions. We have very poor Sahajogis there. You have to go to universities, to younger people. If hippiism can spread, why not Sahaja? It spread like wildfire. Why not Sahaja? All these things are there, which I have to warn you, be careful. If you have got realization, you have a responsibility to give realizations to others and to spread Sahaja. If you can't do it,
then God save you. I have nothing to say. You have to introspect. What have I done for Sahaja? What I have got for Sahaja? And I am sure after this Shiv Puja, you will dedicate yourself to Shiv principle within. Shiv principle doesn't stir out. Is very, very stern. It's very powerful. You have to dedicate. And you have to surrender. Above every other job or every other performance, highest is this. So, with this, I ask Shiva to give you blessings, complete blessings, so that you get transformed into personality of Shiva. May God bless you.
जय श्री माताजी। श्री आदिशक्ति का संपूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। आरती की तैयारी करेंगे। लेट्स प्रिपेयर फॉर आरती। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारक कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ
सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। ओ यस की जो सेवा, ओ यस की जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः बोलो श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी की जय।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री कमल चरणों पर हम प्रार्थना अर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें निरानंद प्रदान कर हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा कर हमें सहयोग प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइए। श्री माता जी, हमें सहयोगी बनाने के लिए हम पूरी सामूहिकता आपके प्रति पूर्णतः समर्पित है तथा कृतज्ञ हैं। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनाए रखे। हमारे सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करने की कृपा करें। जय श्री माता जी। सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज की अनाउंसमेंट। प्रतिष्ठान में होने वाले विकास कार्य और मेंटेनेंस के लिए धनराशि भेजने हेतु आप प्रतिष्ठान पुणे एंड्रॉयड ऐप या pratishthanpune.in इस वेबसाइट पर डोनेशन लिंक का उपयोग करें। आपने अगर इसके पहले ऑनलाइन डोनेशन किया है और आपको डोनेशन रिसीट प्राप्त नहीं हुई है तो कृपया आप प्रतिष्ठान हेल्पलाइन 8881192193 पर संपर्क करें। नए साधक के लिए साप्ताहिक ऑनलाइन ध्यान केंद्र लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल द्वारा प्रति शनिवार को शाम 6:30 से 7:30 बजे लाइव प्रसारित हो रहा है। नई बैच 2 जुलाई से आरंभ हुई है। अगला सत्र 23 जुलाई को होगा। कृपया जागृति देने के बाद नए साधक को ये जानकारी प्रदान करें। सहयोग सीखने में उनको मदद होगी। रीजनल श्री कृष्ण पूजा महोत्सव 19 से 21 अगस्त कोझिकोड केरला से आयोजित किया गया है। 19 अगस्त को हवन शाम 5 बजे, 21 अगस्त को पूजा सुबह 10 बजे आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्री महालक्ष्मी पूजा और सहज विवाह का आयोजन भारतीय सामूहिकता की ओर से इस वर्ष नागपुर एकेडमी में होगा। 3 दिवसीय दिवाली पूजा महोत्सव 28, 29 और 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे हवन, 29 अक्टूबर को सहज विवाह शाम 5 बजे और 30 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे श्री महालक्ष्मी पूजा होगी। अब रेल के रिजर्वेशन आरंभ हुए हैं। अब बुकिंग एडवांस में कर सकते हैं। पूजा स्थल नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे पर नागपुर रेल स्थानक से 30 मिनट और एयरपोर्ट से 40 मिनट की दूरी पर है। आप इस महोत्सव में सादर आमंत्रित है। केवल 9000 सहयोगियों की निवास व्यवस्था पूजा स्थल पर की जाएगी, इसलिए 31 अगस्त से पहले आपका प्री रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
दिवाळी पूजा हेल्पलाइन 9355950960 कार्यान्वित हो चुकी है। आप इस नंबर पर पूजा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी www.diwalipuja.sahajayogaindia.org.in इस वेबसाइट पर प्राप्त होगी। कल के कार्यक्रम इस प्रकार: अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 4 बजे प्रसारित होगा। सुबह का ध्यान सुबह 5:30 बजे लाइव प्रसारित होगा। शाम का ध्यान शाम 6:30 बजे लाइव प्रसारित होगा। कल साप्ताहिक सामूहिक ध्यान केंद्र दिन है। धन्यवाद। आज का ध्यान सत्र यही संपन्न होता है। जय श्री माताजी। तुम्ही करा, मी गाणं गातो, तुम्ही दुसरा हे कॉर्ड नाही तर चेंज करा. मोरया सागा पास सारे ग सारे गा पा सारे गा पा सारे गा पा सा सा ना वगैरे जाद वगैरे सारे गा पा सारे गा पा गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. मोरया मोरया मंगल मूर्ती मोरया. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का? आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का? आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का? थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का? आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का? थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. बाप्पा पाठ ठेवू द्या ना त्यावर येऊन बसाना. 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 बाप्पा पाठ पाठ ठेवू द्या ना त्यावर येऊन बसाना. बाप्पा पाठ ठेवू द्या ना त्यावर येऊन बसाना. बाप्पा पाठ घेऊ द्या ना
येऊन बसाना बाप्पा पाट ठेवू द्याना त्यावर येऊन बसाना आंघोळ घालून मला तुमची पूजा करू द्याना आंघोळ घालून मला तुमची पूजा करू द्याना थोडे थांबाना थोडे थांबाना थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया बाप्पा पाय पुढे कराना त्यावर बाप्पा पाय पुढे कराना त्यावर दूध घालू द्याना बाप्पा पाय पुढे कराना त्यावर दूध घालू द्याना बाप्पा पाय पुढे करा बाप्पा पाय पुढे बाप्पा पाय बाप्पा पाय पुढे कराना त्यावर दूध घालू द्याना त्या पायाचे तीर्थ मला थोडे पिऊ द्याना त्या पायाचे तीर्थ मला थोडे पिऊ द्याना थोडे 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 थांबाना थोडे थांबाना थोडे थांबाना थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 सिद्धिविनायक मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया 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 सिद्धिविनायक मोरया बाप्पा कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना बाप्पा कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना बाप्पा कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना गणपती बाप्पा बाप्पा कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना बाप्पा कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा 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 कपाळ पुढे कराना त्यावर गंध लावू द्याना डोक्यावरती एक फूल मला ठेवू द्याना डोक्यावरती एक फूल मला ठेवू द्याना बाप्पा मला ठेवू द्याना बाप्पा मला ठेवू द्याना थोडे थांबाना थोडे थांबाना थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का थोडे थांबाना बाप्पा थोडे बसाना
गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया, सिद्धिविनायक मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया, सिद्धिविनायक मोरया. शांत बसा बाप्पा, शांत बसा, शांत बसा. गणपती बाप्पा शांत बसा, शांत बसा. गणपती बाप्पा शांत बसा, शांत बसाना बाप्पा, हलू नका ना. शांत बसाना बाप्पा, हलू नका ना. शांत बसाना बाप्पा, हलू नका ना. शांत बसाना बाप्पा, हलू नका. गणपती बाप्पा शांत बसा, शांत 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 बसा. शांत बसाना बाप्पा, हलू नका ना. शांत बसाना बाप्पा, हलू नका ना. तुमचे रूप डोळे भरून मला पाहू द्या ना. तुमचे रूप डोळे भरून मला पाहू द्या ना. थोडे थांबा ना, थोडे थांबा ना, थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का. थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया, सिद्धिविनायक मोरया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया, सिद्धिविनायक मोरया. बाप्पा थोडे उभे राहना, उभे राहना बाप्पा. थोडे उभे राहना, राहना बाप्पा, उभे राहना बाप्पा. बाप्पा बाप्पा बाप्पा, थोडे उभे राहना, मला दर्शन घेऊ द्या ना. थोडे उभे राहना, मला दर्शन घेऊ द्या ना बाप्पा. थोडे गणपती बाप्पा, बाप्पा 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 बाप्पा. थोडे उभे राहना, मला दर्शन घेऊ द्या ना. थोडे उभे राहना, मला दर्शन घेऊ द्या ना. थोडे उभे राहना, मला दर्शन घेऊ द्या ना. प्रसाद देतो तो तुम्ही हळूच घेऊन खाना. प्रसाद देतो तो तुम्ही हळूच घेऊन खाना. थोडे 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 थांबा ना. थोडे 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 थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का. थोडे थांबा ना बाप्पा, थोडे बसाना. मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. सेवा घडू द्या ना, सेवा घडू द्या. सेवा 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 घडू द्या ना. सेवा घडू द्या ना. घडू द्या ना सेवा बाप्पा, घडू द्या ना सेवा.
बाप्पा गडुर्याना सेवा वा. सेवा कडू द्या ना तुम्ही गोड मानून घ्या ना, सेवा कडू द्या ना तुम्ही गोड मानून घ्या ना. गणपती बाप्पा सेवा घडू द्या ना, सेवा 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 घडू द्या ना, सेवा घडू द्या ना तुम्ही गोड मानून घ्या ना. सेवा घडू द्या ना तुम्ही गोड मानून घ्या ना. सेवा घडू द्या ना तुम्ही गोड मानून घ्या ना. रोज येऊन मला तुम्ही दर्शन देत जाना, रोज येऊन मला तुम्ही दर्शन देत जाना, रोज येऊन मला तुम्ही दर्शन देत जाना. थोडे थांबा ना, थोडे थांबा ना, थोडे थांबा ना बाप्पा थोडे बसाना. आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का काका, आला नाही तोवर तुम्ही जातो म्हणता का. थोडे थांबा ना बाप्पा थोडे बसाना. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया. परमपूज्य